Good evening, dear student. Welcome to everyone. Today we are starting some of the remaining points which were related to indirect oral investigation method. Indirect oral investigation, in which I have told you the suitability and merits of this method, and now we will read demerits of this method. What are the demerits? We know that everywhere we are having some merits and some demerits. So indirectly oral investigation means the investigation we are doing, we are asking or taking the inquiry from the others, taking the inquiry from other who is not the person to, sorry, from him or her we want to get the information. From the other person we are asking the information, that is known as indirect oral investigation. So some of the deep merits are: first is less accurate. Less accurate. Less accurate means if I want to ask the information from X, but about X information I am asking from Y. X के बारे में इंफॉर्मेशन यदि मैं Y से पूछता हूँ, तो इसकी क्या गारंटी है कि Y उसका राइट आंसर देगा या सारी चीजें सही 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 बताएगा. So that's why this is the reason that this is the demerit, that the information we are getting it will be less accurate. It means कि जितनी हम इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उतनी इंफॉर्मेशन हमें अच्छी वाली नहीं मिल पाएगी. सेकंड, बायस. बायस्ड. बायस्ड मतलब डिफरेंट इंफॉर्मेशन. डिफरेंट इंफॉर्मेशन मीन्स एक्स एंड वाई. एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन में वाई से पूछता हूँ एंड आई एम आस्किंग कि क्या वाई स्मोकिंग करता है, सॉरी एक्स स्मोकिंग करता है, तो वाई आंसर देगा कि यस, एक्स स्मोकिंग करता है. और वही आंसर यदि मैं एक्स से पूछता हूँ तो एक्स कहेगा कि नो. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज बायस. It means one is giving right answer and another is giving wrong answer. So what is right and what is wrong, we can't able to understand it. So this is the demerits of this. Now the third is doubtful conclusions. Doubtful conclusions. So what is the doubt? Doubt means we are getting the information about some other person. Then that time we will have some doubt that the information we are getting, up to which level the information is right. ये डाउट हमेशा हमारे बीच में रहेगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम एक्स के बारे में वाई या जेड या के से ले रहे हैं वो कितना सही होगी. सो वी विल हैव द डाउट अबाउट इट. सो दीज आर द डिमेरिट्स. नाउ डियर स्टूडेंट्स, we will read next method, and that is information from local sources or correspondence. Third method, informations from local sources or correspondence. Please write under this method the investigator appoints local person or at different places they collect information in their own way and furnish to the investigator.
इसको आप यूं समझ लीजिए, सपोज दैट अ पर्सन about him or her we want to get information, and his office time is 9 o'clock and coming time is 8 o'clock in the evening. सपोज कीजिए कि वो आदमी 9 बजे घर से निकलता है और रात को 8 बजे शाम को घर पे आता है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे जब वो घर से निकलता है तो एक आदमी किसी को घर के बाहर की तरफ कहीं अपॉइंट कर दिया। अब मान लो वो बस स्टॉप से बस लेता है तो एक को बस स्टॉप पे अपॉइंट कर दिया। फिर इसी ड्यूरिंग वो कहीं बीच में रुकता भी है तो एक वहाँ पे अपॉइंट कर दिया। फिर वो जिस ऑफिस में जॉब करता है एक उस ऑफिस के बाहर लगा दिया, और जहाँ पे वो जॉब करता है वहाँ पे एक आदमी ऑफिस के अंदर लगा दिया। If the different persons we are appointing, they will collect the information about one person, and then after they will submit it to the investigator. Such types of information investigation is known as information from local sources or correspondence. It means in this method we will appoint local person at different places and they will collect information. वो अलग अलग लोग क्या करेंगे, information को collect करेंगे, they will collect the information and then after they will furnish it finally to investigator. Suitability, what is the suitability, when it will be suitable? When it will be suitable, first, when we need a regular and continuous information. So dear student, this method will be suitable when we need continuously information. जब हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्या होती है, कंटिन्यूसली होती है, तब हम ये मेथड काम में लेंगे। और सेकंड, वेयर इट विल बी सुटेबल, व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज। इट मीन्स कि हमें काफ़ी लंबे एरिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, तो हमें डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा और उनसे इंफॉर्मेशन को हमें लेना पड़ेगा। थर्ड, when we need information when information is to be used in journals, magazines, और रेडियो और टीवी एक्सेट्रा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये सभी रिपोर्टर्स होते हैं, आप देखिए अलग अलग जगह अपॉइंट होते हैं, एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस दे आर कलेक्टिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन. Some may be related to rain, some may be related to accident and different protest activities, and they will give these information to the editor, and then after the edition the editor will publish them into newspaper. So we can use this method where we need the information for our magazines or journals. Next point. Four, suitability. A very high degree of accuracy we need. A very high degree of information is not required. Is not required. One thing that we can see that if different person we are appointing, अलग अलग लोगों को हम अपॉइंट करते हैं तो कन्फर्म है कि इंफॉर्मेशन भी बायस हो सकती है। तो जब हमें ज़्यादा कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती तब ये मेथड काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्टर्स,
There are many reporters X, Y, Z, PQR, all will give information about the accident. तो एक्सीडेंट हुआ है तो कंफर्म है एक्सीडेंट की इंफॉर्मेशन देंगे. अब ये थोड़ी है कि एक्सीडेंट को बहुत बढ़िया दिखा कर देना है या मतलब एक बढ़िया वाला एक्सीडेंट की रिपोर्ट देनी है, तो वहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं. एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन, so there is no need that specification should be there. So where there is no need for high degree of accuracy of information, we can use this method. Now we will understand its merits and demerits. So first please write merits. इसके क्या क्या फायदे हैं? फर्स्ट, इकोनॉमिकल. It means less time, money, or efforts is required because many persons are doing work in less remuneration. अलग अलग जगह लोग काम करेंगे तो वो अपना काम पर्सनली भी करते रहेंगे और ये इंफॉर्मेशन भी देते रहेंगे, तो उतना यहाँ पे उतना ज़रूरत नहीं होता. दैट द मोर मनी वी नीड टू स्पेंड ऑन इट. सेकेंड, वाइड कवरेज. डिफरेंट पर्सन वी आर अपॉइंटिंग, सो इट मे बी वाइड कवरेज. इट मीन्स कि वो ज़्यादा जगह की इंफॉर्मेशन बड़े आराम से ले पाएंगे. इट अलाउज वाइड कवरेज. It allows a fairly wide coverage of investigation. Third, already I have discussed with you continuity. It means we get regular information. This is the benefit. As the same, we are appointing the reporters. You can see that all are giving information on daily basis. Many newspaper companies are appointing them. For example, Dainik Bhaskar. In every area, we are having the reporters, and on regular basis, they are providing information. And early in the morning, we are getting newspaper for suitable for special purpose. Suitable for a special purpose. It means suppose that we want to calculate the quotations from the different market for the construction index, for the construction. CONSTRUCT and construction of index number. It means if it's for a special purpose we need information, then a special person we can appoint for it and they will provide information. Some demerits are also related to it, so we will write and understand. Now we will write demerits. Demerit of this method. What are the demerits? First, already we have discussed that many persons have been appointed. Then I think it may be not, it may be possible that original information we will not get. Some bias information we can get. Loss of originality. What is the reason? Because we are not having personal contact. Lack of personal contact.
For example, if an accident is happening somewhere and reporter is collecting information, तो अब उस रिपोर्टर ने जिसका एक्सीडेंट हुआ है या उस फैमिली से क्या चीज़ पूछी, तो ये हमें पता नहीं है. हमें तो जो रिपोर्टर इंफॉर्मेशन देगा, द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय रिपोर्टर, वी विल पब्लिश इट. So here may be possible that some of the original information we will not be able to understand, or we will not able to get them. So original loss of originality by it may be happen. Second, lack of uniformity. Lack of uniformity. What is the reason? Uniform means the data will not be uniform because many persons are collecting it. Many persons are collecting informations. So informations will not be uniform. Third, the same is personal bias. Means different persons are collecting different information, so their information may be different. Different persons are collecting informations, so information may be biased. Last, 4, less accurate. ACC. Less accurate. The information is collected may not be possible that these are accurate. Fifth, delay in collection. Information is collected by different person, so there will be no coordination between them, and may be possible that there is some information we will collect after some delay. So we have completed this topic, and the next topic is next method is fourth method, information through questionnaires and schedules. Questionnaires and schedules. Schedules means tables, questionnaire means number of questions we are making. So dear student, there are two methods for it. By this method, first, mailing method. Second, enumerators method. In brief, I want to explain you that in questionnaire method, first we will make a questionnaire of 15 to 20 क्वेश्चन. पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चनेयर की लिस्ट बना लेंगे जिसमें 15 to 20 क्वेश्चन होंगे, and this question will be in the sequence of easy to difficult, and this method will apply when we are collecting information where it is not possible to approach easily,
और द रिमोट एरिया, इट मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन जहाँ पर पहुँचना आसान, ऐसी जगह जहाँ पर पहुँचना आसान नहीं हो, द प्लेस वेयर it is not possible to go, or the different places are there, generally it is very difficult to go there, for example remote area, जैसे राजस्थान के जितने भी गांव में हैं उनसे अलग अलग लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो बच्चों बहुत बढ़िया तरीका होगा, आप एक क्वेश्चन बना लीजिए, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, पेपर होगा, 1 और 2 पेज होंगे, उनको एनवेलप में डाला और एड्रेस पे आप सेंड कर दोगे, एंड यू विल अटैच अ लेटर विद इट that we want to collect the survey related to this topic, and these 20 questions are being sent to you, please answer it and send it back to given address, और उनको एड्रेस भी दिया जाएगा रिटर्न एनवेलप का, तो उस पर एड्रेस लिखा हुआ होगा, तो वो अपने क्वेश्चन को जो भी है टिक करके और वापस सेंड कर देंगे. दिस इज नॉन एज इन मेलिंग मेथड. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड इट. मेलिंग मेथड. A. Mailing method. Under this method, questionnaires are mailed to the informants or you can say respondent. A letter is attached with this questionnaire giving the purpose of inquiry. We will also ensure the respondent that their information will be kept secret. They will be assured to keep their information secret, as secret. Now, what is the suitability of this method? Where we can use it, we will understand. ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होता है, ये हम रीड करेंगे. सुटेबिलिटी. फर्स्ट, वेयर एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, जिसे दूर दूर तक अलग अलग गाँव से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. वी वांट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट एरियाज वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, इवन वी कांट एबल टू डू फोन, यहाँ तक कि हम वहाँ पे फ़ोन भी नहीं कर सकते. तो ऐसी जगहों के लिए ये मेथड स्पेशल होगा, यूज़फुल होगा. एरिया ऑफ स्टडी इज़ वेरी वाइड. Area of study is very wide. And second, informants are educated. The informants educated. उनका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इफ दे आर नॉट एबल टू read the questionnaire, then I think they will get difficulty to give answer. So they all should be educated. Now we will discuss about some of the merits. क्या इसके बेनिफिट हैं? फर्स्ट, इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल कैसे होगा?
क्योंकि इसमें टाइम का सेविंग ऑफ टाइम होगा, टाइम मनी एंड एफर्ट्स, सेविंग ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स। सी original, the data we are getting, it will be original because the respondent to whom we are sending the questionnaire, he will give answer, जिसको हमने भेजा है वो इसका आंसर देगा, so it will be original, fairly, it will be reliable, third, wide coverage, it will allow wide coverage, it means कि आप बहुत बड़ी जगह पर या बहुत लंबे एरिया तक आप इसको कवर कर सकते हो। वी नो दैट वेयर वी आर हैविंग सम मेरिट्स सम डीमेरिट्स ऑल्सो, जहाँ पे कुछ मेरिट्स होते हैं वहाँ डीमेरिट्स भी होते हैं, सो डीमेरिट्स हम डिस्कस करेंगे। डीमेरिट्स, सम द नेगेटिव बेनिफिट, फर्स्ट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसमें बच्चों ऐसे हो सकता है दैट यू आर सेंडिंग द क्वेश्चनेयर, मे बी पॉसिबल दैट दे विल नॉट टेक एनी इंटरेस्ट, कि आपने क्वेश्चनेयर भेजी और मान लो कि अरे कौन आंसर देगा, और उस क्वेश्चनेयर को कहीं भी डॉर में डाल के रख दिया और भूल गए, तो दे विल नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स, मे बी पॉसिबल, बिकॉज हम उनके सामने नहीं है ना। इफ हम उनके सामने हैं दैट कि सर प्लीज गिव आंसर ऑफ दिस 20 क्वेश्चन, देन दे विल गिव इट, और सर इसको प्लीज कंप्लीट करके हमें वापस दीजिए, तो वो देंगे। बट इफ वी आर सेंडिंग थ्रू मेल and we are waiting that after 15 days they will respond, they will give response, but after getting it they are not taking interest, उन्होंने इसको रिसीव कर लिया, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पटक दिया साइड में, तो वो कुछ का कुछ भी आंसर नहीं देंगे, सो वी कैन से दैट lack of interest is there, then I think it will be useless. Second, lack of flexibility, flexibility means we can't do any change in question. Suppose that respondent is asking the reading the question and he is find difficulty, रेस्पोंडेंट क्वेश्चन को रीड करता है, अपने घर उसके मेल पहुंच गई और वो पेपर को रीड करता है और उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, खाली छोड़ देगा। यदि आप सामने होंगे तो क्या बोलेंगे, इफ वी आर इन फ्रंट ऑफ हिम देन कि सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग, कि सर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्यों क्या पूछना चाहते हो, तो हम उसको दूसरे तरीके से पूछेंगे कि सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ या ऐसे पूछना चाहता हूँ, तो वो रिप्लाई देगा। But this is the minus point of this method, that he is getting questionnaire and he will read the questionnaire. May be possible that in some of the question, suppose that these are in English and he is getting problem in English spelling. उसको लगता है कि स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, उसको खाली छोड़ देगा या उसका रेस्पॉन्स नहीं देगा। सो दैट टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन दिस। लिमिटेड यूज, dear student, these information will be limited because certain question we are including in it. Certain questions we are including in it. Only they will give answer about it because हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर आस्किंग 20 क्वेश्चन, so they will give answer only 20 question, so it is of limited use. We can't use it in form of investigation. आप इसको इन्वेस्टिगेशन की तरह बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, biased. Suppose that you are sending the email to Mr. Ram Sharma.
but at his home he is handing over this questionnaire to his son. मान लो राम शर्मा अपने बेटे को बोल देते हैं कि बेटा इस क्वेश्चनर को भर दो और वापस सेंड कर दो, तो आपने एक्सपेक्ट किया था कि एक 30 इयर्स का व्यक्ति राम शर्मा इसका आंसर देगा, बट आपको थोड़ी पता है कि उसके बेटे ने आंसर दिया है। बच्चे ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, टिक लगा दिए ABCD जो भी है, या उनकी मर्जी से जो आंसर है वो दे दिया। MCQs है तो वो टिक लगा देगा, क्वेश्चनियर है तो वो उसमें अपने अकॉर्डिंग आंसर दे देगा, तो ये बायस्ड होगी। That's why may be biased, and due to bias it will be less accurate. Last point, fifth, less accuracy. Due to that some of the questions, some question may be difficult, some questions may be difficult, and respondent is not able to give answer. Suppose that some of the questions are not easy and they are not able to give answer and they are feeling that these are difficult, then I think these questions will be less accurate. So this is less accuracy of the questionnaire, and we will not able to achieve the target for which we were sending the questionnaire. Next, second method is enumerator method. इसका सेकेंड मेथड हो जाएगा इन्यूमरेटर मेथड। यस, इन्यूमरेटर मेथड में क्या होगा, इसको आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्वेश्चनियर विल बी प्रिपेयर्ड बट इट विल नॉट बी सेंट थ्रू मेल। It means in questionnaire, enumerator will go or approach personally and he will ask the question. It means enumerator means the person who want to collect information. In this method, the enumerator himself approach the informant. With the questionnaire. Yes. Suitability. First, field of investigation is large. Same. Second, it is for special purpose. When enumerator is skilled and educated. जब enumerator skilled होगा या educated होगा, he is well trained, then this method will be suitable. Investigator is well versed in the local language. जिनसे वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसको वो लैंग्वेज आने भी चाहिए। नेक्स्ट, मेरिट ऑफ इट।
Thank you very much, dear student. We will complete this class in our next session. Time is over.